तो एक महत्वना समाचार सामे આવી રહ્યા છે। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथविधि समारोहમાં પહોંચ્યા છે। महाराष्ट्र शपथविधिનો જે કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યો છે તેમાં 200 વીવીઆઈપી પણ હાજર રહેવાના હોય ત્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, અમિત શાહ, ગૃહમંત્રી દેશના સહિતના 22 રાજ્યના મુખ્યમંત્રી પણ આ શપથ સમારોહમાં હાજરી આપી રહ્યા છે। તેના સીધા દ્રશ્યો આપ મહારાષ્ટ્રથી જોઈ રહ્યા છો કે જ્યાં મુંબઈ મહાયુતિ સરકારનો શપથ ગ્રહણ સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે શપથવિધિ સમારોહમાં ભાજપ દ્વારા શક્તિ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું હોય જેના ભાગરૂપે विविध राज्यों मुख्यमंत्रीओ पण उपस्थित है। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देशना गृहमंत्री अमित शाह तो जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह सहित 10 कैबिनेट मंत्रीओ पण आ शपथ समारोह में हाजरी आपता नजरे पड़ी रहा है। सेलिब्रिटी लईने उद्योगपतिओनो जाने के जमावड़ो आ शपथ ग्रहण समारोह में जोवा मळी रह्यो छे। बॉलीवुडना दिग्गज कलाकारों होय के पछी क्रिकेट जगतना जे सेलिब्रिटी है तेनाथी लईने मोटाभागना सेलिब्रिटीनी हाजरी जोवा मळी रही है। चंद्राबाबू नायडू, नीतीश कुमार शपथविधि में उपस्थित जोवा मळी रह्या छे। અત્યારે હાલ જે દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે તેમાં નીતિશ કુમાર, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, જેપી નડ્ડા, રાજનાથ સિંહ સહિતના 22 કેબિનેટ મંત્રીઓની હાજરી જોવા મળી રહી છે અને તેમની હાજરીમાં શપથ સમારોહ યોજાયો છે જેમાં મહારાષ્ટ્રમાં મુખ્યમંત્રી તરીકે દેવેન્દ્ર ફડણવીસ શપથ લઈ રહ્યા હોય ત્યારે શપથ લેવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે ત્યારે મુંબઈમાં મહાયુતિ સરકારનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ યોજાયો છે। સતત ત્રીજી વખત દેવેન્દ્ર ફડણવીસ છે તેઓ શપથ ગ્રહણ કરવાના છે મુખ્યમંત્રી પદ તરીકે। शपथविधि समारोह में भारतीय जनता पार्टी शक्ति प्रदर्शन योजવામાં આવ્યું છે જેમાં 10 कैबिनेट मंत्रीओ शपथ समारोह में हाजर रह्या छे। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह सहितना कैबिनेट मंत्रीओ पण आ शपथ समारोह में उपस्थित जोवा मळी रह्या छे। शपथ ग्रहण समारोह में सेलिब्रिटी लईने उद्योगपतिओनो जमावड़ो छे। मोटी संख्या में वीवीआईपी लोको पण उपस्थित जोवा मळी रह्या छे त्यारे विविध राज्योना मुख्यमंत्रीओ पण आ शपथ समारोह में हाजरी आपी रह्या छे। मुकेश अंबाणी सहितना उद्योगपतिओ पण आ शपथ समारोह हाजरी आपी रह्या था नजरे पड़ी रह्या छे। देवेंद्र फडणवीसने आप जोई रह्या छो जो देवेंद्र फडणवीस त्रीजी वखत महाराष्ट्रनी कमान संभाळशे तेओ शपथ ग्रहण करीने मुख्यमंत्री पद स्वीकारशे अने तेओ तेमना शपथ समारोहमां मुख्यमंत्रीना शपथ ग्रहण समारोहनी अंदर वडाप्रधान नरेंद्र मोदी, देशना गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा अने राजनाथ सिंह सहितना कैबिनेट मंत्रीओनी खास उपस्थिति जोवा मळी रही है। आ शपथ समारोहमां खास वीवीआईपीओने पण आमंत्रण आपवामां आव्युं छे त्यारे आप जोई रह्या छो प्रमाणे शपथ ग्रहण समारोहनी अंदर एकनाथ शिंदेथी लईने क्रिकेटर्स है, उद्योगपतिओ है और बॉलीवुडना जे ख्यातनाम कलाकारों है तेमनी पण हाजरी जोवा मळी रही है। तेमनी हाजरीमां शपथ ग्रहण समारोह योजावा जई रह्यो छे त्यारे वडाप्रधान नरेंद्र मोदीनी खास उपस्थिति जोवा मळी रही है और ज्यारे 10 कैबिनेट मंत्रीओ पण उपस्थित होय त्यारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा आ शपथ समारोहनी अंदर शक्ति प्रदर्शन करवामां आवी रह्युं छे अने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा शपथ ग्रहण करवामां आवनार छे त्यारे अजित पवार और एकनाथ शिंदे पण आ शपथ ग्रहण समारोह में हाजर है तेओ पण शपथ लई शके तेवी संभावना व्यक्त करवामां आवी हती अने जेपी नड्डा आप जोई रह्या छो, गृहमंत्री अमित शाह जोई रह्या छो, चंद्राबाबू नायडू है, नीतीश कुमार है जे देशना एनडीएना गठबंधन में जे साथी पक्षों है तेमनी पण हाजरी जोवा मळी रही है त्यारे विविध राज्यों मुख्यमंत्रीओनी पण हाजरी आ कार्यक्रम में उपस्थिति जोवा मळी रही है। अभिनेताओं में सलमान खान, शाहरुख खान थी लईने विविध ख्यातनाम कलाकारों पण उपस्थित जोवा मळी रह्या छे। एवा क्रिकेटर्सनो पण जमावड़ो जोवा मळे छे त्यारे बॉलीवुडना सेलिब्रिटीज है तेमनो पण जमावड़ो आ कार्यक्रम में नोंधवामां आवी रह्यो छे। खास नोंध लेवामां आवी रही है कि विविध उद्योगपतिओ, विविध कलाकारों महाराष्ट्रनी अंदर शपथ समारोह मुख्यमंत्रीना शपथ ग्रहण समारोह में हाजरी आपता नजरे पड़ी रह्या छे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहारना के तेओ पण हाजरी जोवा मळी रही है तेओ पण अमित शाहनी साथे जोवा मळी रह्या छे। अमित शाह, चंद्रबाबू नायडू, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और वडाप्रधान नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आ शपथ ग्रहण समारोह योजायो है त्यारे आप सीधा दृश्यों जोई रह्या छो कि महाराष्ट्र के ज्यां वडाप्रधान नरेंद्र मोदी की हाजरी जोवा मळी रही है एवामां विविध राज्यों मुख्यमंत्रीओ पण तेमनी साथे उपस्थित है। साथ बीजेपी शासित राज्यों मुख्यमंत्रीओ आ शपथ ग्रहण समारोह में पण हाजरी आपता नजरे पड़ी रह्या छे त्यारे विविध राज्यों मुख्यमंत्रीओ होय, कलाकारों होय, क्रिकेट जगतना सेलिब्रिटीज है कि बॉलीवुडना ख्यातनाम कलाकारों है तेमनी पण मोटी संख्या में उपस्थिति जोवा मळी रही है। कुल मंत्रीओ है तेमां 10 कैबिनेट मंत्रीओनो समावेश थाय छे। 10 कैबिनेट मंत्रीओ सहित 21 થી 22 मंत्रीओ पण आ कार्यक्रम में उपस्थित जोवा मळी रह्या छे। एवामां विविध वीवीआईपी उपस्थिति में हाजरी में देवेंद्र फडणवीस हवे शपथ ग्रहण करवा माटे पहोंची रह्या छे। डेप्यूटी सीएम पद और नाणां मंत्रालय डेप्यूटी सीएम पद जोवा मळी रह्युं छे। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून
माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेल आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री यांना पुष्पगुच्छ देतील. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना
प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देतील. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री अजित आशाताई अनंतराव पवार. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व विवेकबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देतील. माननीय राज्यपाल महोदय, आता ह्या शपथविधी कार्यक्रम पूर्ण झाला आहे. कृपया सर्वांनी राष्ट्रगीतासाठी उभे राहावे. તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ઉપસ્થિતિમાં મુંબઈમાં એટલે કે મહારાષ્ટ્રમાં શપથ સમારોહ યોજાયો, જેમાં દેવેન્દ્ર ફડણવીસે મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા.